Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे। हम प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे और इस खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश। सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the seventh time in a row. Real GDP growth for the current financial year projected at 7%. Cash deposit facility in banks through use of UPI soon, announces RBI. Reserve Bank to allow investment trading of sovereign green bonds at IFSC Gujarat, and benchmark indices end flat. Sensex rises by 21 points. Nifty settles above 22,500 level. रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लगातार 7वीं बार 6.5% के स्तर पर बनाए रखा। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने बताया कि यूपीआई के माध्यम से बैंकों में नकद जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रिजर्व बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर के माध्यम से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश और कारोबार किया जा सकेगा और घरेलू शेयर बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स 21 अंक बढ़ा, निफ्टी 22,500 के स्तर पर बना रहा। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. In our top story, the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged for the seventh time in a row, announcing the first bi-monthly monetary policy for the current financial year. Beginning on the 1st of this month, RBI Governor Shaktikanta Das this morning said the Monetary Policy Committee has decided to keep the repo rate unchanged at 6.5%. Repo rate is the interest rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks. Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर के माध्यम से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश और कारोबार किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ये घोषणा की। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में घोषणा की थी। इसके बाद जनवरी 2023 में इन ग्रीन बॉन्ड्स को जारी किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को अपने ऋण लेने के कैलेंडर में शामिल कर लिया। मौजूदा समय में सेबी में सूचीबद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के उन नियमों का पालन करना होगा जिनकी उन्हें पहले से अनुमति है। Puneet, what's your take on the MPC committee's recommendation that the repo rate should be unchanged for the seventh time in a row at 6.5%? There was one member in that committee who had a different opinion that there should be a reduction by 25 basis point. There should be a cut by 25 basis points. So what's your take? There seems to be a balance between growth and ensuring that inflation is also under control. There's a target of inflation being 4.5% for the entire financial year, and the second quarter is expected to be 3.8%. So why is it that the repo rate has not been cut?
So, Arjun, as you know, that it was widely expected that RBI will maintain the repo rate at the current levels, and it has been at this level for the last about approximately a year. And before that, RBI has put up a very spirited fight against inflation, because inflation had reached 7.8% last year, and therefore RBI felt it was expedient to act vigorously to fight inflation, and I think they really won this battle. However, I think RBI doesn't want to let go of this fight too early, in a sense that they are still maybe apprehensive that if they ease up on money supply, they ease up on interest rates now, the inflation might shoot up again. So I think RBI really wants to ensure that we are on the path to sustainable growth at low interest rates in future. And I think that is why RBI continues to maintain vigil. But if you look at the statement of the governor, that is very positive. He seems to say that, look, we are no longer concerned or excessively concerned about inflation. In fact, he went on to say that the elephant in the room, which is inflation, he said that elephant in his room has gone for a walk, and hopefully he is headed for the forest now. So clearly, RBI governor was kind of indicating that he doesn't expect inflation to come back as a threat to the economy. And but I think for some time they want to maintain this stance of withdrawal of liquidity to support inflation, fight against inflation. And my own guess is that maybe in the next policy meeting or after that, maybe in June onwards, we might see some kind of cuts and easing on liquidity. लेकिन पुनीत, जैसे कि कुछ हम देखें कि मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है, बावजूद इसके जो हमारे फूड आइटम्स हैं, खाने के आइटम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की कमी की हमें उम्मीद थी वो नहीं है. तो क्या इस तरह के कारण हैं जो आरबीआई को अभी रोक रहे हैं इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव करने के लिए? अमरीश, देखिए, अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो ज़्यादा आने की आशंका थी, क्योंकि दो सप्लाई साइड और डिमांड साइड होती है. डिमांड साइड जो पैसे से डिटर्मिन होती है, उसको हमने कंट्रोल किया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिमांड यानी मनी सप्लाई को थोड़ा कम किया. और सप्लाई साइड है जो सामान का जो अवेलेबिलिटी है मार्केट्स के अंदर. सप्लाई साइड पर कई बार बहुत परेशानी होती है, और सप्लाई साइड पे अगर शॉर्टेज हो, जैसे सामान की शॉर्टेज हो, तो वहाँ इन्फ्लेशन आ सकता है. तो मुझे लगता है एक तो सरकार की जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जहाँ पर उन्होंने सप्लाई साइड को बहुत अच्छा मैनेज किया. पिछले साल आपने देखा दालों को लेकर, शुगर को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट विजिल है इस वक्त, क्योंकि ऐसा लगता था कि शुगर प्राइसेस बहुत शूट अप कर सकती है. तो शुगर को, आटे को, दालों को, इन सब चीज़ों को लेकर प्रोएक्टिव कदम उठाए और सप्लाई साइड को मैनेज किया गया. तो जैसे आपने कहा कि शॉर्टेज भी नहीं है, लेकिन उसका ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर प्राइसेस बहुत क्रैश हो जाए तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो. एक बहुत मुश्किल, एक टाइट रोप वॉक होती है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा बैलेंस बनाना, खास तौर से जब आपकी पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की हो. आपको उस पॉपुलेशन को फीड भी करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें किसान का नुकसान भी ना हो और कंज्यूमर का नुकसान भी ना हो. तो मुझे लगता है बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही है, और उसका असर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है, वहाँ हमें काफ़ी हद तक मैं कहूँगा जीत हासिल हुई है. जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी हमें फ्यूल साइड पे आ रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें तो वो फिर शूट अप कर रहे हैं, वहाँ से एक थ्रेट है. और जो जैसे अर्जुन ने पूछा था पहले, तो मैं कहूँगा कि आरबीआई इस वक्त उसको लेकर शायद थोड़ा चिंतित हो, तो वहाँ उन्होंने protection. So a negative externality, which is fuel prices, $90 per barrel. I'm sure we'll read the news later in this program as well. What about the marginal standing facility and the bank rate? So how liquid are the banks, and what is the RBI doing in terms of the VRR auctions to ensure that there is maintenance of surplus and deficit is contained? So, you mentioned the VRR, which is a variable reserve repo rate. Now, what RBI has done is they wanted to keep interest rates, maintain interest rates at a certain level, but they also wanted to maintain liquidity in such a manner that it did not hurt economic growth. So it's again, like I said earlier, it's a very, very difficult policy path to walk. But RBI has been doing it through a variety of means. So whether it is VRR auctions, whether it is maintaining the MSF rate at 6.75, and no. At the same time, if you look at the data which came out today, in fact, last few days, banks have been declaring the deposit growths and the advance growth. It's been very impressive. If you look at overall growth of loans in the last quarter, it's about 17-18% for banking sector. And deposits have also grown at 11-12%. So clearly, while RBI was tightening money supply to control inflation, it did not hurt
either the deposits or the lending by banks, and I think it's really commendable. So, what about the impact on the debt market, specifically on bonds, which is treasury bills, notes, and bonds issued by the central bank, and generally the debt market for that matter, especially where you have the repo rate at 6.5%? What are the yields to be expected with this decision? So Arjun, as you know that when RBI embarked on this path of tightening, everybody was apprehensive that bond yields will shoot up, and bond yields shooting up means the companies will have to borrow at higher levels, which will hurt the bottom lines, it will hurt economic growth and employment. So all that is tied in. Interestingly, last year when RBI was tightening money supply and was on this aggressive path, we saw the bond yields on 10-year government bonds, they shot up to about 7.45, 7.5. And in the last few months, even when RBI has not cut interest rates, these bond yields are now down to 7.05. So while the RBI maintains tight liquidity, we have seen the bond markets, the yields have come down, which is again supportive of economic growth. So I think it's a great achievement. You keep a tight money policy and yet you manage to bring down government bond yields, which is again remarkable. जी पुनीत, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि अब यूपीआई के माध्यम से बैंकों में कैश भी डिपॉजिट किया जा सकेगा, तो ये कितना क्रांतिकारी कदम होगा, किस तरह का प्रभाव इसका आपको दिखाई देता है? देखिए, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक यूपीआई का जो इस्तेमाल होता था वो सिर्फ पैसा विड्रॉ करने के लिए या पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता था. यानी अगर हम मनी के पैसे की प्रणाली में इसकी बात करें तो उसका रोल सिर्फ आधा था. और जब अगर आप पैसा भी डिपॉजिट करने की सुविधा मिलती है यूपीआई से, तो मुझे लगता है पूरा एक ऑल्टरनेट बैंकिंग मैकेनिज्म ये एक होगा. और इसलिए क्रांतिकारी है कि दुनिया में ऐसा कहीं है नहीं. अगर आप वीज़ा, मास्टर कार्ड जो दूसरे सेटलमेंट सिस्टम्स हैं आप देखें तो वहाँ भी मनी ट्रांसफ़र और मनी विड्रॉल का ही मैकेनिज्म है, लेकिन मनी डिपॉजिट ऐसे किसी माध्यम के थ्रू हो, ये यूनिक है मेरे ख्याल से भारत में. So how do you see the calibration of the repo rate in the remaining 5 meetings for this financial year? The total of 6, one has already taken place today, ended today in this 2-day meeting. You have 5 left. How is the RBI going to calibrate the repo rate? So Arjun, as you know that the RBI will be holding a meeting every 2 months in this year. So first one we had which ended today. It's a bi-monthly meeting. So my own guess is, like I said, the next meeting maybe will be around month of June, and then I think after that meeting we might see some easing up on liquidity as well as interest rates. So post June maybe some cuts may be there. जी पुनीत, एक और जो महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने घोषणा की है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लेके है कि उनमें निवेश और कारोबार दोनों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी सुविधाओं की घोषणा की है. इसका कितना असर आपको दिखाई देता है? देखिए, बहुत बड़ी एक चीज़ है. मैं आपको इसका थोड़ा सा एक मिनट लूँगा इसको एक्सप्लेन करने में. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हमने पहले भी इशू करे थे, सरकार ने 2022-23 के बजट में अनाउंस किया था, और ये अभी तक रूपी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं. तो ये जो बड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यदि वो भारत में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पहले भारत में पैसा लाना होता है, कन्वर्ट करना होता है रूपी में, और फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के लिए मुश्किल काम है. आज जो घोषणा की है आरबीआई गवर्नर ने, उन्होंने कहा है कि ये ग्रीन बॉन्ड्स हम गुजरात में जो IFSC है उसमें हम ये अलाउ करेंगे. यानी और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी है जो गुजरात में जो है, वहाँ पर आप डॉलर अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर में ही, उनको रुपए में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डॉलर में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और डॉलर में ही बाहर रिपैट्रिएट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी ओपन करेगी. जो ग्लोबल बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड फंड्स हैं, वो भारत में निवेश कर पाएंगे ग्रीन बॉन्ड्स में. तो ये उसका महत्व है आज की अनाउंसमेंट का. जी. और चलते हैं अगली खबर की ओर. शेयर बाज़ारों का हाल जानते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने और दुनिया के बाज़ारों में नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाज़ारों में आज लगभग यथास्थिति बनी रही. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 21 अंक यानी 0.03% बढ़कर 74,248 अंकों पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22,514 अंकों के पूर्व स्तर पर बना रहा.
Benchmark indices ended flat today after the RBI maintained the status quo on key interest rates amid a negative trend in global markets. BSE Sensex rose by 21 points, a 0.03% to close at 74,248. Nifty 50 ended flat at 22,514. Among the Sensex constituents, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Financial Services and HDFC Bank were among the major gainers. On the other hand, Ultra Tech Cement, Larsen & Toubro and Bharti Airtel ended the trading session in the red. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, mid-cap and small-cap indices gained 0.5% each. In sectoral indices at the BSE, Realty rose 1.5%, Financial Services jumped 0.9%, and BankX soared 0.83%. In contrast, Tech declined 0.5% and IT fell 1%. Let's have a look at the currency market now. और विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.24 पर कारोबार कर रहा था। Puneet, we saw the markets going up and falling today, even though it's not had a adverse impact on the volatility index, but there seems to be an onset of correction coming into the market. What's your take? So Arjun, as you know, that yesterday US markets saw a huge drop. In fact, it fell. The Dow Jones fell 900 points intraday towards the close yesterday. It was trading about 200-300 points higher, and then suddenly there was a statement from one of the Fed governors, and the markets fell by 600 points. In fact, they fell by 900 points and closed in the red by 600 points. So everybody got up this morning expecting a huge fall in India, as all other Asian markets were also down. It is remarkable that we saw no sense of panic. There was no huge selling by either FIIs or domestic investors, and we closed. So you might say that okay, the market closed flat today, but the truth is that we outperformed the global markets by a huge margin today by managing to close flat. So it shows the kind of strength that the Indian domestic markets have right now, whether it is domestic investors or even foreign investors. If I look at the data from foreign investors, there were marginal sellers today. So clearly, I think we are charting a very different course from the global markets, though we are influenced by them. I'm not saying that we are immune to the global trends, but yes, we are showing huge resilience at the current levels. Well, the DIIs, which includes mutual funds as well, they followed the trend of the US market because they were net sellers to the tune of 3,370 crore rupees. In fact, the FPIs, who should have been net sellers, ended up being net buyers in the market to the tune of 1,659 crore rupees. So why this contrarian view, DIIs being the net sellers, not the net buyers? See, today, of course, it was a slightly different day because I explained to you the global markets were actually in a huge meltdown. And in spite of it, India was a sea of calm today in the morning. And I think fund managers who had been loading up on a lot of Indian stocks, and we saw a lot of inflows into domestic mutual funds, they were just taking some money off the table. They wanted to build some profit cash. Booking. Some profit booking was there. But FIIs, which were actually selling in other markets, I think they find Indian markets very attractive, and they were reallocating capital to India. Arbitrage. It appears to be like that. So my sense is that foreign investors who were selling in other markets where they were losing money have chosen to be in India because India appears to be a very stable market. तो आप ये मानते हैं पुनीत, इसका मतलब कि जो शेयर बाज़ारों का हाल रहा आज, उसमें जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वही ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति थी उसका कोई ख़ास असर बाज़ारों पे नहीं आया? देखिए, रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है. तो शॉर्ट टर्म में अनलेस की कोई स्पेसिफिक प्रपोजल्स हों जिससे बैंकिंग क्षेत्र पे कोई फर्क पड़ता हो, तो क्योंकि आज की पॉलिसी जो थी वो एक वेल एंटिसिपेटेड थी, हम ऐसे ही पॉलिसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो नंबर्स भी जो थे जीडीपी ग्रोथ के, इन्फ्लेशन के, वो एंटिसिपेशन जो एक्सपेक्टेड लाइन्स थे उस पर थे. तो मुझे लगता है आरबीआई की पॉलिसी का बहुत फर्क नहीं था. ग्लोबल मार्केट्स का बहुत डर था. आज सुबह जब बाजार खुले हमको लगता था कि बाजारों में गिरावट आएगी. वहाँ हम काफ़ी सरप्राइज हुए आज कि वहाँ कोई पैनिक नहीं था और बड़े स्टेबल थे. तो हालांकि मैं अभी भी ये कहूँगा, और मैं कुछ सप्ताह से ये बात मेंटेन करता हूँ कि इन्वेस्टर्स को, क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत चिंताएं हैं, उनको कॉशियस रहना चाहिए. मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बाज़ारों में बिना रिस्क को देखे इन्वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
डेफिनेटली कॉशन का टाइम है, कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं इन्वेस्ट मार्केट के लिए. Puneet, if you look at our markets, and right now the disclosures are that the F&O market is 400 times more active in terms of volumes as compared to the cash market, because our stories are all carrying cash market stories right now, and it's the institutional investors who are either buying or selling in the cash market, FIIs, DIIs, but the retail investor, they are speculating in the F&O market, the weekly expiry and the monthly expiry. So that's also giving direction to what's happening with the Sensex and Nifty in the cash market. So what's your take? What's going to happen next week, and what's the weekly report telling you? So you are right. India's stock market, India's futures and derivatives market, which is a speculative market to a large extent, it's the world's largest market now. We are almost close to what Chicago does, which is unthinkable. No, we are 99.4% volumes are in the derivatives market absolutely. now. So that is what it actually meant, that a lot of investors, with the false hope that they will make quick gains, it appears to offer you quick profits. You can leverage very easily. A lot of investors participate in derivative markets, and I actually meant to caution them, saying that look, this is not the market to make quick gains. This is a market to be a long-term investor, and I personally would recommend small investors not to participate in the derivatives market. They should stick to mutual funds, safer investments until they are experts. I'm not saying derivative markets are not good, but they're meant for experts, people who have enough experience or expertise to deal with them. So what's the direction for the Sensex and Nifty for next week, Puneet? I remain cautiously optimistic. और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं पुनी जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, यदि मैं मुझे आज इसमें निश्चय हो गया है कि जो आरबीआई ने जो कहा उसको मैं ध्यान से सुनता हूं, और जब मैं जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें देखता हूं, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है. साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देख रहे हैं, वो सस्टेन कर रही है. और अभी देखिए क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं अगले 10 में भी, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने होंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छे ही होंगे. तो ये क्षेत्र अच्छे लगते हैं. जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर यूएस फेड के एक अधिकारी की टिप्पणी के बाद एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख दिखाई दिया. इस अधिकारी ने कहा था कि मुद्रास्फीति को लेकर जारी चिंता के बीच यूएस फेड संभवतः ब्याज दरों में ऐसी कटौती न करे जिसकी वॉल स्ट्रीट उम्मीद लगाए है. जापान के निकेई में 2%, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1%, सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.20% की गिरावट दर्ज की गई. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स भी गिरकर बंद हुआ. यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार भी गिरावट के बीच कारोबार कर रहे थे. फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स दोनों ही 1.5% नीचे चल रहे थे. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी में भी 1% की गिरावट दिखाई दे रही थी. Japan fell by 2%, Nikkei 225, and they're in a technical recession right now, 2 consecutive quarters of marginal negative growth. The yen is trading at 151 to the US dollar, which is at an all-time low right now. So what's your take on Japan, and why the surprise? So one thing we must remember, that Japan is now trading at 35-year high levels for the stock market. So the markets which really had been down for last 30-35 years, they took off recently, and because of the policies of the Bank of Japan, which has now chosen to end the regime of negative interest rates. They're also exiting the treasury market of the US. So clearly, because they need to that liquidity for growth in Japan, they're looking at better economic growth in Japan. So while the pullback today was quite severe, I would say it's not a matter of concern, considering that the markets were trading at a 35-year high in Japan. Well, let's have a look at the US market now. The 3 major US stock indices declined 1% each as Fed Reserve officials took a cautious approach in comments on the outlook for interest rate cuts, and investors brace for Friday's US monthly jobs report. At closing bell, Dow Jones Industrial Average was down by 1.4%. The S&P 500 fell 1.2%, and the Nasdaq Composite dropped 1.4%. A lot of sentiment in the US stock market is based on consumer purchases. So, and that's tied to their employment, the jobs report as well. But why this swing today? Eventually, the Dow Jones fell by 530 points. What's the likely
impact, is that going to be carried forward in the other trading sessions as well, or will there be a halt to that? So Arjun, a lot of optimism in America is right now hinges on the fact that there's an expectation of interest rate cuts in the next few months. So they're expecting interest rate cuts beginning June, and I think US economy's expectations are built on that. What happened yesterday was that when Dow Jones opened, it opened actually 350 points higher. And there were hopes that economy was doing well and therefore the markets will do better. And then towards the end of the session, there was a statement by one of the Fed governors, like I said earlier, who said that they may not cut interest rates at all in America in the current year. And therefore the markets tanked. So clearly it seems that the US markets are completely aligned with the expectations of an interest rate cut. If it happens, maybe the markets will do better. If a cut doesn't happen, and which looks likely because US economy is doing very well right now, inflation is okay, and oil prices have gone up. So all this builds into inflation expectations. So my sense is that US markets are poised very delicately at present. Well, let's have a look at the crude oil market. Oil prices were trading higher today amid the threat of supply disruptions from prolonged conflict in West Asia. Brent oil futures were trading above $90 a barrel, a level not seen since last October, with prices heading for the second weekly gain. Brent crude oil futures was up at $90.99 per barrel, whereas WTI West Texas Intermediate was higher at $86.76 when reports last came in. So, when we talk about futures contracts, clearly there's an obligation of delivery as well. There's an obligation. You enter into a contract and that's the amount you pay and that's the barrel of oil you get. But how concerned are we with West Asia in terms of delivery to the end user? Countries like India, countries like Pakistan, countries like all across South Asia. So Arjun, in fact, the screws on the oil market, so-called, I can say, are being tightened actually by the OPEC and Russia Plus, because they continue to maintain very tight supply. They're cutting output in Middle East to support prices higher, and that's what we are seeing. Because there was a lot of geopolitical tension lately last week, and immediately we saw oil prices go higher. It is not about US being able to supply or not, because US has a certain limitation how much surplus oil it can supply to the market. But India is now one of the largest buyers. We are one of the largest buyers, and we are buying a lot of oil from Russia. We are trying to buy from Middle East at reasonable rates, but we are susceptible to oil prices right now. I mean, clearly we consume huge quantities of oil. We're also building strategic oil reserves now afresh. That is to prevent the producers from blackmailing India in future. I mean, to some extent, I'd say it's a good strategy, but it won't give any good results in the short term. जी, और चलते हैं सोना चांदी का हाल भी जान लेते हैं। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 43 रुपये की तेजी के साथ 69,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। अंतिम समाचार मिलने तक मई अनुबंध के लिए चांदी 576 रुपये घटकर 69,408 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार में सोना कॉमेक्स पर $2,313 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी $26 और 88 सेंट प्रति औंस पर चल रही थी। पुनीत, आप क्या कहेंगे? सोने की में लगातार जिस तरह की बढ़त है वो निवेश के लिए कितना अच्छा विकल्प है निवेशकों के सामने? देखिए, सोने की जो इस वक्त जो ट्रेंड है, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं दुनिया भर में, चाइना में बहुत बड़ी परचेजिंग हो रही है गोल्ड की, भारत में भी परचेज रहती है, तो इस वक्त जो लगता है मुझे कि गोल्ड में जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, वो कंटिन्यू करेगा। बहुत ज़्यादा देखिए वो नहीं रहता। $2300 रिकॉर्ड लेवल है इस वक्त गोल्ड का। मुझे लगता है यहाँ से 5 से 10% और बढ़ सकता है, पर एक गोल्ड जो है वो एक सेफ्टी के हिसाब से एक अच्छा निवेश माना जाता है। तो मुझे लगता है जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में निवेश करना अच्छा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो सरकार इशू करती है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ करना चाहिए मुझे लगता है। पर इट शुड बी ओनली, मतलब बहुत स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा हम तेज़ी नहीं देखते हैं, बट एक रीजनेबल अप ट्रेंड है। Briefly, what's the upper limit for gold? $2,310 per ounce, silver at $27 right now. What is the upper limit? Briefly. So, technically speaking, because we can make an estimate, I think $2,600 is what market is expecting. जी, पुनीत जी, चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश।
Headlines in closing. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the seventh time in a row. Real GDP growth for current financial year projected at 7%. Cash deposit facility in banks through use of UPI soon, announces RBI. RBI to allow investment trading of sovereign green bonds at IFSC Gujarat, and benchmark indices and flat. Sensex rises 21 points. Nifty settles above 22,500 level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. लोक निर्णय 2024। Welcome, listeners, to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ हम स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानेंगे वहां की चुनाव तैयारियों के बारे में और चुनावी माहौल के बारे में भी। आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शेषाद्रिचारी। डॉक्टर शेषाद्रिचारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। The headlines. CEC directs municipal commissioners and district election officers to prepare booth-wise action plan to enhance voter participation. Scrutiny of nominations for second phase of Lok Sabha elections conclude. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses public meeting in support of BJP candidate in Churu, Rajasthan. Election Commission issues notice to Aam Aadmi Party leader and Delhi Minister Atishi, asks her to submit reply by Monday noon. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नगर निगम आयुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बूथवार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। और निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया, सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। Chief Election Commissioner Rajiv Kumar has directed municipal commissioners and district election officers from select districts to prepare a booth-wise action plan for enhanced voter participation and behavior change. He also asked them to prepare different strategies for urban and rural areas and plan interventions accordingly for different targeted audiences. The Chief Election Commissioner said this while chairing the Election Commission meeting with municipal commissioners and district election officers from select districts in New Delhi today. The conference on low voter turnout was held to increase voter turnout in the 2024 Lok Sabha elections. The CEC urged the authorities to act in a manner that instills pride among the voters in participating in the democratic festivities. He also called for a movement in which people are self-motivated to vote. Mr. Kumar said that 215 rural and 51 urban parliamentary constituencies with low voter turnout have been identified to reach out to voters in targeted manner. जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई थी। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 और मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकते हैं।
Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has today said the entire country has resolved to become a developed nation. In the last 10 years, his government has fulfilled basic needs of the common man, which were pending for decades. Mr. Modi addressed a public meeting in support of BJP